Everyone. Good evening or good afternoon, wherever you are. I thought today I'll make a video about etiquettes, the work etiquettes basically that you need to have, or you should be having those when you are working here in Australia or maybe in any other country that you go. So I might be speaking in Hindi little bit, so really apologize for that, but I think I'll be able to explain more better. So इन 2019 में एज यू नो आई केम और मैंने आते ही यहाँ पे पहले आईटी इंडस्ट्री 19 डेज़ में मुझे जॉब मिल गई थी बिकॉज मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफ़र कर दिया और जैसे मुझे रेफ़र किया मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया एंड दे टोल्ड मी टू जॉइन ASAP सो बेसिकली आई जॉइंड आफ्टर 19-20 days. इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन हेयर. बहुत बड़ा बैंक भी है और उसकी आईटी टेलीकॉम कंपनी में मैं थी. आई एज यू नो आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर और मैंने वहाँ ज्वाइन किया. द कल्चर वॉज वेरी वेरी डिफरेंट. बेसिकली आई वुड से 360 डिग्रीज का डिफरेंस था. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो आई हैड 14 years of experience in India working in different IT organizations. So आई थिंक कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं सोचती हूँ कि विल बी रेलेवेंट फॉर यू एंड इफ़ यू कमिंग हियर एंड इफ़ यू गॉट अ जॉब एंड यू स्टार्टिंग एज अ न्यू fresher. So I think the very first thing is arriving on time. So मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था क्योंकि मुझे सिटी, मैं सिडनी में हूँ और सारे ऑफिसेज मोस्टली आईटी के टाउन हॉल सिटी में हैं और मुझे सिटी पहुँचने में ऑलमोस्ट डोर टू डोर मोर देन 1 hour लग जाता था. बेसिकली यू हैव टू डिपेंड ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो मुझे सुबह टू 9 o'clock वहाँ पहुँचने के लिए आई हैड टू टेक अ बस एट 7:45 एंड रीच द स्टेशन विच इज़ द पैरामीटर स्टेशन विच इज़ ट्रेन स्टेशन. और ट्रेन स्टेशन से मुझे एग्जैक्टली 30 minutes लगते थे सिटी पहुँचने में. सो सिटी में जाते जाते देन यू हैव टू वॉक टूवर्ड्स टू द ऑफिस एंड कितना भी तुम ट्राई करो, समटाइम्स द बस इज़ कमिंग लेट, समटाइम्स द ट्रेन मिस हो जाती है, समटाइम्स द ट्रेन इज़ एब्सोल्युटली फुल. यू नो then you tend to get late. And I was told by my manager that the expectations from you would be कि तुम time पे पहुँचो. If you can't reach by 9, even if you're 5 minutes late, because there was a daily stand-up which used to happen, they used to ask me where are you, and I have to inform my manager much beforehand. And you won't believe कि after a lot of delays, जो मतलब कितनी बार होता था कि it's raining, yeah, I would miss my bus or something like that, and I was told that we'll issue you a letter that you're not coming on time. So बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे जब भी आएँ, इनफैक्ट थोड़ा सा बफर लें, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें, जल्दी पहुँच जाएँ ताकि उन लोग को भी लगे that you are taking the job seriously and you are really punctual, क्योंकि यहाँ पे बहुत वैल्यू करते हैं कि आप टाइम पे पहुँचो, राइट. नंबर सेकंड थिंग इज़ इंटरप्टिंग इन बिटवीन व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग. सो आई थिंक एज इंडियंस या अपने देसी लोग हम क्या करते हैं व्हेन वी वर्क, तो दो लोग बात कर रहे हैं तो हम बीच में जाके इंटरप्ट करेंगे, भाई 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 सुन, कैन यू हेल्प मी विद दिस, और यार ये मेरा कोड देख ले, या ये इशू है ये बता दे. सो यहाँ पे यू कांट डू दैट. You can't just interrupt when two people are talking and start with your own conversation or start with your own issue. You have to wait for them to finish. I know many people would say that this is a basic etiquette, but I would say, in my personal opinion, I've seen many people doing that back home. And make sure that you don't do that. You say, excuse me, or you say if you have time, or just ping the person on Teams or whatever communication mode that you're using and ask them that if you're free, I would like to discuss something or an issue. Just don't go and walk impromptu and start discussing the issue, right? एंड थर्ड थिंग इज़ नॉट क्रॉसिंग द पर्सनल लाइन. ये मैंने चीज़ बहुत फील करी, वो ये कि लाइक मेरी कोलीग थी जो मुझे हैंड ओवर दे रही थी बेसिकली, एंड शी वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड आई जस्ट वॉकड अप टू हर एंड जस्ट लीन्ड एंड आई सेड, कैन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. एंड शी वॉज लाइक, शिवॉन, you can't cross this this line, and please don't come close to me. It's my private I don't know, personal line, and stay away from me a little bit, and probably थोड़ा सा दूरी बना के मेरे से बात करो. And I think people don't like that you lean on, and like India में हम जाके सिस्टम पे खड़े हो जाएंगे किसी के और हम बोलेंगे कि हाँ, टेल मी, या ये बता दो मुझे. तो you can't do things like that here.
they take it very personal, and I think they only allow people like their friends and colleagues or people like that to be close to them. Otherwise आप थोड़ा सा distance बना के ही बात करें. I don't know if it's relevant again. The next one is sharing food. सबसे बड़ा शौक जो था वो ये था कि मैं खाना लेके आती थी और मेरे एक दो और फ्रेंड्स थे इंडिया से पाकिस्तान से. We used to share food, but here what I've seen is people don't share their food at all, maybe because of the allergies or whatever, but maybe the upbringing is different, maybe the culture is different. But यहाँ पे बहुत वो है कि आप अपना खाना लाए हो, अपना खाना गरम करो या whatever way, you just eat it. If you want to eat on the seat, eat it. But don't share your food with anyone, और किसी को don't पूछना भी मत कि would you like to try. I mean, until unless they show interest that, oh, what you're trying, what is this, or if they ask you, then otherwise don't do any sharing. Then the other thing is taking breaks together. इंडिया में क्या होता था कि वे बैक वी यूज टू पिंग ईच अदर, चल भाई चाय पीने चलते हैं, चलो यार चाय पीने चलें, या कॉफ़ी चलते हैं, लेट्स गो आउट. तो यहाँ पे क्या होता है कि द मैनेजमेंट विल लुक अप टू यू दैट ओ यू आर टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम द वर्क. सो बेसिकली मेक श्योर करें कि अगर आप ब्रेक पे जा रहे हैं तो आप किसी और को लेके मत जाएं अगर सिमिलर टीम के हैं, और or just go get your coffee and come back, or if you want to just hang out in the in that breakout area, do that. But don't try and take breaks together, because obviously it will get noticed and people or your manager or your anybody might just point out to you. Okay. The next thing is taking your leaves. यहाँ पे एक चीज़ बहुत important है that you just don't take impromptu leaves कि ओ आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हर महीने पेट में दर्द हो रहा है, या हर महीने कुछ ना कुछ issue हो रहा है. Don't create those things, right? Because they think that, oh, Indians come here and they're not able to compete, they're always falling sick and blah blah. So try and plan your leaves. Obviously, I understand we can have sickness at home, we can have sickness with our kids, but try and plan your leaves as much as possible and avoid taking impromptu, because that's your first job here in the country. You're trying to prove yourself, you're trying to prove your worth basically, right? So try and do that. And only the last thing I would say is, um, always, I would say, have understood the non-verbal cues कि बंदा आपसे कैसे बात कर रहा है. Is he interested in you when he's talking to you, or he's just giving you orders? And also when you meet anyone, just shake hands with them for the very first time. Obviously everybody does that back home as well, and look very confident into their eyes, and make sure that you have a good formal in your cupboard, so that when you go, you smash your day and you show them, yes, that you are made for the job and you have prepared yourself really well. And carry your notepad and your pen wherever, and make some notes wherever you feel. And whenever you are learning new things from people, make sure you take notes. And they don't like that you ask them the same thing over and over again. So I might be wrong, but that's what I have experienced. So दैट्स इट. आई थिंक लिसनिंग, मोर एक्टिव लिसनिंग रखें जब आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं. अपना फीडबैक तब दें जब वन यू सी योर प्रूव्ड योर वर्थ, or if you feel that it will be valued, because you've just joined the organization, you don't know who's who. पहले तो ये जानने की कोशिश करें who's who and who are your basic stakeholders. Try and understand your manager, the working ways of how your manager works within the team, and who are his favorites, and who what all things. Probably have a word with him, have a one-on-one with him as much as possible. Try and understand from him that how am I doing after a month. Get regular feedbacks, so that that where you're falling short and you can work on that. Yeah. So I hope you like this video, and I hope this helps anyone out there, and I'll be making more of these. Till then, have a good day. Bye bye.